Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industrial Relation and the Labor Law. Today topic is approaches to the industrial relation. This is the fifth topic in your unit 1. Moving toward the references part, the today PPT has been made from these sources. Talking about the today topic, as you know that in a previous session we have discussed about the industrial relation meaning definition. We have discussed about the industrial relation objective and discussed about the actors involved in a industrial relation and what are the features of the industrial relation. Now in today session we discussed about the three approaches of the industrial relation. There are the three approaches of the industrial relation. If we look into the book or if we go through the book, you will get some two more approaches, that is a Gandhian approaches or the social psychological approaches. But there are basically three common approaches: unitary, pluralistic and Marxist approaches is basically most accepted, universally accepted approaches, and this approach is basically in your syllabus. So we will detailedly we can discuss over these approaches. Now, firstly, we to talking about the first approaches, that is a unitary approaches. Unitary approaches it says that believe in a unity and bringing together effort of the individual for the teamwork and common objective. Unity approaches basically believe in unity. This approach is basically the base of this approaches is unity between worker and the management. This approach is believe that the worker and the management uh, should should work together and bringing the effort of individual for the teamwork and work for the common goal objective achievement. तो बिलीव करती है कि वो जो काम वर्कर एंड मैनेजमेंट है वो यूनिटी की तरह काम करें और कंपनी के गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करें और इंडिविजुअल अपने एफर्ट को अपने कंपनी के गोल के अचीव के लिए यूज करें. This is all about the unity approaches. Unity approaches believe that conflict are non-permanent and malfunction which are result of the improper management in the organization and result of the misunderstanding. Unity approach says that the conflict होते हैं वो non permanent in nature होते हैं, means conflict basically temporary होते हैं और can easily be finished. तो conflict सबसे पहले arises होते हैं और temporary होते हैं और जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं. और कंपनी में जो भी वर्कर एंड मैनेजमेंट होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट के कंप्लीट होने के बाद, मतलब कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद दोनों मिलकर कंपनी के गोल को अचीव करते हैं. और इन्होंने बताया कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बेसिकली आर रिजल्टेंट ऑफ द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अराइजेज ड्यू टू द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ड्यू टू द इम्प्रॉपर मैनेजमेंट in the organization, conflict arises. This is the main approach. This is the main belief of the unitary approaches. Now, the third thing that about the unity approaches is belief that conflict is perceived as disruptive. Unity approaches says that the conflict होते हैं is give rise a strike. Basically, जो conflict होते हैं, the resultant of the conflict is basically a strike and lockout. And strike and lockout are useless and it is destructive nature. Nobody, even not the worker or the management, both party do not get any benefit from this kind of conflict, and both are get some kind of loss from their perspective. So we can say that जो conflict होते हैं वो destructive होते हैं as per the unitary approaches. So this is the three things that we have studied and the unitary approaches. So let's move toward the objective of the unitary approaches. Unitary approaches basically has three objectives. The first one is says that to create a productive and effective harmonious work environment. Unity approaches basically want to create a productive, effective, harmonious work environment. Basically, जो unity approaches है, their focus is to make a good relationship between the worker and the management. And if the worker and management are in a good relation, they can be productive and effective. So unity approach believe to create a productive, effective, harmonious work environment in the organization. The second objective of the unity approach is that unity approach is to develop a trustworthy, open, fair, and transparent work culture. Unity approaches want to develop a trust
Trust means the management and the worker both trust each other. Means the worker should trust the management and the management should trust the worker, and both party should be open and fair to each other, and there should be a transparent work culture between the management and the worker. This is the main objective of the unitary approaches. And the third objective of the unitary approach is that unity approaches believe that the communication or the negotiation between the management and the worker should be direct. There should not be involvement of the tribunal or the other government organization. To a unitary approach, ट्रिब्यूनल, ट्रेड यूनियन और अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती. दे वांट टू बी रेस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ द ट्रिब्यूनल while negotiating between the management and the worker. मैनेजमेंट एंड वर्कर आपस में अपनी नेगोशिएशन को, अपनी रिजॉल्व, अपनी कॉन्फ्लिक्ट को आपस में रिजॉल्व करे विदाउट इन्वॉल्विंग द ट्रिब्यूनल, trade union or the government or association. It means that unitary approach do not believe or do not want to restrict the role of the tribunal. The tribunals और trade union के rules को restrict करना चाहती थी. Basically जो trade union है उनका जो main objective होता है, they want to be have a good communication between the management and the worker, or the direct communication between the management and the worker without involving the tribunal, trade union or the government organization. It means that the unity approach do not believe in a tribunal and trade union organization to resolve the management and the worker issue. Now this is all about the unitary approach. Moving toward the second approach, that is a pluralistic approach. Pluralistic approach basically opposite to the unitary approaches. Pluralistic approach assume that organization is composed of the individual who form a distinct group with their own set of aims, objective, leadership style, and value proposition. Pluralistic approach says that in organization there are different kinds of individual are survive, and this different kind of individual is basically form a distinct kind of groups. Means individual want to be part of a different kinds of group. This group can be formal and informal, and their group nature is, जो ग्रुप होता है, ग्रुप का जो नेचर होता है, इज बेसिकली काइंड ऑफ डिफरेंट. हर एक ग्रुप का डिफरेंट सेट ऑफ एम्स होगा, एंड द ग्रुप हैज सम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, leadership style and value proposition. It means that different groups have a different aims and different objective, style and preparation are totally different, and this distinct group is basically creating a conflict between each other. तो जो distinct group होते हैं ये आपस में conflict create करते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के थॉट, एम्स सब कुछ अलग है और वो डिफरेंट ग्रुप में अटैच्ड हुआ है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस होते हैं क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं. इस वजह से प्लुरलिस्टिक अप्रोच बिलीव करता है कि इंडिविजुअल के डिफरेंट नेचर्स के कारण वो अलग अलग ग्रुप बना देता है, एंड दिस ग्रुप बेसिकली क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट. इन कॉन्ट्रास्ट टू द यूनिटरी अप्रोच के बिल्कुल अपोजिट प्लुरलिस्टिक अप्रोच इज कंसिडर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एज अ रैशनल एंड इनएविटेबल. Pluralistic says that conflict तो होंगी means there must be conflict between the management and the employee. There is no doubt, and this conflict are rational. Basically, is a genuine, and it is a very common thing that conflict will arise between the management and the worker. There is no issue because both party have a different kinds of thought, style, and aims and objective, and this conflict is basically inevitable. You can't be able to control you can't be able to avoid such kind of conflict. आप ऐसे conflict को avoid नहीं कर सकते हैं as per the pluralistic approach. So we can say that the unity approach ने कहा कि जो conflict होते हैं is basically arises due to the mismanagement of the management. यू कैन से द मिसमैनेजमेंट जब कंपनी की साइड से होता है तब जाके कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं बिल्कुल बेसिकली टेम्पररी इन नेचर होता है एज पर द यूनिटरी अप्रोच. बट opposite to the unity approach, pluralistic approach says that there must be conflict between the management and the worker. This is rational and inevitable, means you cannot avoid the conflict between the management and worker. But unity approach says that you can avoid the conflict between the management and the worker. But the pluralistic approach says that this is conflict is rational and can be, and this is basically inevitable, means cannot be avoided. But you can see that pluralistic approach says that this conflict is, yes, this approaches cannot be avoided, but this approaches can be you can say these approaches basically can be can
we can take some action, or you can say preventive action, or settling the conflict, but you cannot avoid the conflict. You can take some kind of measures, or the preventive measures, or the settling in order to रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. तो हम कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं, मगर कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द प्लूरिस्टिक अप्रोच. प्लूरिस्टिक अप्रोच की आइडियोलॉजी क्या थी? द प्लूरिस्टिक अप्रोच की जो मेन आइडियोलॉजी थी, दिस इज द first one is trade union are the legitimate representative of the employee interest and they must be recognized. Pluralist approach is totally believe in the role of the trade union. Pluralistic approach basic ideology is that they want to uh, they want to involve the trade union while dealing with the employee and the management issue. ट्रेड यूनियन को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड दे वांट दैट कि एम्प्लॉय जो है, वेन एवर द एनी काइंड ऑफ इशू इज अराइजेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, दो दैट काइंड ऑफ इशू विल बी रिजॉल्व बाय द ट्रेड यूनियन. तो इट मीन्स दैट प्लूरिस्टिक अप्रोच बिलीव इन द ट्रेड यूनियन और द एसोसिएशन टू रिजॉल्व द इशू बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द worker, and they believe that employee interest is basically employee के जो interest होते हैं basically is protected by the trade union. So it means that pluralistic approach believe in the trade union or the association, but um the unitary approach is totally opposite to that. Unity approach is do not believe in a trade union or the government association के रोल को इम्पोर्टेंस नहीं देती है, और दे डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व और रेस्ट्रिक्ट द रोल ऑफ द ट्रेड यूनियन. तो यहाँ पर प्लूरिस्टिक अप्रोच ट्रेड यूनियन को फेवर करती है, और यूनिटी अप्रोच में यूनिटी अप्रोच ट्रेड यूनियन को फेवर नहीं करती है. Now the second point about the pluralistic approach ideology is that stability in industrial relation is the product of the compromises between the management and the union. Pluralistic approach says that here the ideology is that stability in a relation, industrial relation, is only happen when the management and the worker, or the worker की जो representative, that is a trade union, both compromises with each other. स्टेबिलिटी तभी आएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन द मैनेजमेंट एंड द यूनियन, ट्रेड यूनियन, बोथ पार्टी कॉम्प्रोमाइजेस विद ईच अदर, एंड सम वे मैनेजमेंट कुछ कॉम्प्रोमाइज करे एंड द यूनियन सम वे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करे. तो दोनों कॉम्प्रोमाइजेस जब करेंगे देन ओनली स्टेबिलिटी इन द इंडस्ट्री विल ब्रिंग आउट. तो तभी एक स्टेबिलिटी मेंटेन होगी जब दोनों पार्टी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करेगी. दिस इज द प्लूरिस्टिक अप्रोच आइडियोलॉजी. Now moving towards the third ideology, that is according to the pluralistic, collective bargaining is the best method for resolving all kind of dispute. Pluralistic approach or ideology says that collective bargaining is the best method for resolving all kind of dispute. Pluralistic approach says that in order to resolve any kind of issue between the management and the worker, the collective bargaining is the best way to resolve that kind of dispute. कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो वर्कर होते हैं, वर्कर के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मीन्स ट्रेड यूनियन, they put forward the interest of the, or the, you can say, the problems of their worker towards to in front of management, and the management जो होता है वो एम्प्लॉयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, both the management and the trade union both sit together, and they put forward their issues in front of each other, and they come to a mutual decision and try to resolve the issues that arises in the organization. This is all about the collective bargaining. The pluralistic approach believe in the collective bargaining process to resolve all kind of dispute that arises in the organization. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में बिलीव करता है प्लूरिस्टिक अप्रोच आइडियोलॉजी. एंड द लास्ट वन इज दैट प्लूरिस्टिक अप्रोच की जो आइडियोलॉजी है, मैनेजमेंट अथॉरिटी इज नॉट इजीली एक्सेप्टेड एंड द एम्प्लॉय ज्वाइन ट्रेड यूनियन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. Pluralistic approach ideology says that management authority is not easily accepted by the employee. Employee management authority को easily accept नहीं करती है, and they totally restrict to accept the
अथॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट, एम्प्लॉय क्या करते हैं, मैनेजमेंट अथॉरिटी को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड दे बिकॉज दे फील वेरी एक्सप्लॉइटेड, दे एक्सप्लॉइट फील करते हैं एम्प्लॉय एंड तो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, एम्प्लॉय क्या करते हैं, एम्प्लॉय बेसिकली ज्वाइन द ट्रेड यूनियन एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं एंड दे पुट फॉरवर्ड देयर problems in front of trade union and the trade union is put forward employee problem in front of management. So through this you can say that the ideology, pluralistic ideology believe that management that the employee join the trade union to protect themselves फ्रॉम द मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो मैनेजमेंट अथॉरिटी से बचने के लिए ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. This is the main ideology of the pluralistic approach. Now, moving toward the last approach, that is a Marxist approach ideology. This Marxist approach is just like a pluralistic approaches. They are, both pluralistic and Marxist are somewhat similar kind of, but there is a little bit differences. Now we would study in this way what is that differences. Now Marxist is just like a pluralistic and regards, Marxist says that the conflict between the employer and the employees are inevitable. In the same way as the pluralistic approach says, the Marxist approach says that, and the Marxist ideology is that the conflict तो होंगे between the employer and the employee, and this is inevitable. It cannot be avoided or cannot be controlled. तो conflict तो होंगे and they are accepting this kind of conflict. तो Marxist भी pluralistic की तरह conflict को agree करता है. They know that conflict will always be arises between the employer and employee. The second point is here is however the pluralistic believe that conflict is inevitable in the organization, in all organization. The Marxist see it is as a product of the capitalist society. This is the most important thing is here. The basic difference between the pluralistic and the Marxist approach is that pluralistic believe that conflict is inevitable in all organization. Means जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अराइजेज होंगी और इट कैन नॉट बी कंट्रोल. हर एक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, whether the organization have a small or big or have a different hierarchy, it totally in all kind of organization conflict will arises. This is the main theory of the pluralistic approach. But Marxist says that conflict is basically product of the capitalist society. Marxist says that conflict is arises only in a capitalist society. Capitalist society में ही conflict होते हैं, सभी organization में conflict arises नहीं होते. Marxist believe that capitalist society में ही conflict होंगे, सभी organization में नहीं होंगे. But the pluralistic approach believe that conflict हर एक organization में होते हैं. तो capitalist सोसाइटी होती क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी बेसिकली दो सोसाइटी वेयर द मैनेजमेंट इज एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर. जिस सोसाइटी में मैनेजमेंट वर्कर को एक्सप्लॉइट करते हैं, दिस सोसाइटी इज नोन एज कैपिटलिस्ट सोसाइटी. और मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस होते हैं बिकॉज द मैनेजमेंट इज बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग देयर वर्कर एंड दैट्स व्हाई द कॉन्फ्लिक्ट इज अराइजेस. तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस होंगे एंड ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस नहीं होते. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लूरलिस्टिक एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच. द मार्क्सिस्ट approaches thus focus on the type of the society in which an organization function. So जब the Marxist जो main focus है, it totally depend upon it totally says that what kind of a society in an organization in which the organization is function. तो जो main focus है Marxist का, they want to know what kind of a society in which the organization is function. किस organization, किस society में organization work कर रही है. If the society is capitalist, then it means you can say that if the society is capitalist तभी conflict arise होंगी. और अगर society
कैपिटलिस्ट नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस नहीं होंगे। तो कैपिटलिस्ट का जो मेन फोकस है इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सोसाइटी वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शन। किस सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करी, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केस ने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की थी। द मेन फोकस इज ऑन डिपेंड अपॉन द सोसाइटी। Now moving towards the next point, that is a trade union can be seen as a labor reaction to the exploitation by the management. Marcus in a same manner as like a pluralistic trade union को can be seen as a labor reaction to the exploitation by the management. Marcus also believe in a trade union and they want that every worker is joining the trade union to avoid the exploitation by the management. Whenever the management is try to exploit the employee, जो एम्प्लॉय होता है, जब भी कोई एक्सप्लॉइटेशन मैनेजमेंट के द्वारा होता है, देन एम्प्लॉय ज्वाइन द ट्रेड यूनियन एंड दिस ट्रेड यूनियन इज बेसिकली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय. तो मार्केस आल्सो बिलीव इन अ ट्रेड यूनियन एंड दे नो एंड दे रिकॉग्नाइज द role of trade union. Now the next point is that under the Marxist ideology is that trade union act as a mean of the social change. ट्रेड यूनियन जो होता है बेसिकली एक इज प्ले एज अ मीन ऑफ सोशल चेंज. इट ब्रिंग अ चेंज as a socially in the organization. Marcus believe that trade union is basically bringing the change in an organization as a socially, and this trade union is work to improve the working condition of the worker. And the Marcus ideologies believe that the trade union main function is to improve the working condition of the worker, and the trade unions is always work for the favor of their employee, and they always concern towards their employee, their working condition, their interest. It means the worker, the trade union is basically work towards the employee interest protection. Now, the next point regarding the Marcus approach ideology is that in this approach, all strike are political. Marcus approach says that all strike that arises in the organization are of political in nature. Means this arises basically made for the organization. इसमें main motive तो organization का होता है, but later on all strike are टर्न इनटू द पॉलिटिकल. तो ये सब पॉलिटिकल में चेंज हो जाती है. मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्ट्राइक्स होती है वो पॉलिटिकल नेचर या पॉलिटिकल टाइप की हो जाती है बाद में. तो दिस इज ऑल बिलीफ ऑफ द मार्क्स अप्रोच आइडियोलॉजी. एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट द Marcus approach ideology is that Marcus regard the state intervention of the legislation and the creation of the industrial tribunal as a supporting management interest rather than ensuring a balance between the competing group. Here the Marcus believe that the state intervention means जो भी state का intervention होता है, जो involvement होता है, और legislation होता है means कानून होते हैं, rules and regulation and act होते हैं, जो भी tribunals होते हैं, जो tribunals means जो भी कोर्ट होते हैं, जजिंग होते हैं, दिस ऑल थ्री पार्टीज स्टेट इंटरवेंशन, लेजिस्लेशन एंड द ट्रिब्यूनल इज वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इंटरेस्ट. तो ये जो पार्टीज होती है बेसिकली दे वर्क फॉर द दे वर्क इन फेवर ऑफ मैनेजमेंट. तो वर्क मैनेजमेंट के फेवर में काम करते हैं, मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है rather than ensuring the balance between the competing. ये वर्कर के बिहाफ पे या वर्कर की इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करती है. दिस बेसिकली स्टेट इंटरवेंशन और लेजिस्लेशन और जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं वे बेसिकली मैनेजमेंट के फेवर में काम करती है, मैनेजमेंट को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, वो वर्कर की इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देती. और दे शुड हैव टू बी नीड टू बी मेक अप बैलेंस बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट इंटरेस्ट. तो उनको वो इंटरेस्ट ना करके देयर फोकस इज टूवर्ड द मैनेजमेंट प्रोटेक्शन. मैनेजमेंट इंटरेस्ट, मैनेजमेंट की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द three approaches. First one is unitary approaches, and then second one is pluralistic approaches, and the third is the Marcus approaches. This is all about the approaches of the industrial relation, and you can say that I hope you understand the topic of the approaches of the industrial relation, and you can easily identify which one approaches is unitary and which one is heuristic and Marcus, and what are the main difference between the all three approaches. So this is all about the today lecture. Okay, my dear student, thank you.